if I'm the West Indies cricket board right now, I'm very pissed. Yes. I would be very pissed because I'm hosting a World Cup. As it is hosting a T20 World Cup, I'm hosting after 2007-10. 2010, I'm hosting a World Cup after 14 years और इंडिया नहीं खेल रही है मेरे home soil पे. And you know, a lot of West Indies cricket facilities have been newly made. They've been invested in. A lot of money has been put in there, and India is not going to be playing there. We're going to be playing in a country where cricket doesn't really have any roots. I understand what ICC is trying to do. I respect that they're trying to grow the game. US is the big market that they want to break into. Lekin yaar, I don't know. I mean, but shouldn't they start with more bilateral series first instead of just giving away a World Cup? नहीं, bilateral आप नहीं कर सकते हो क्योंकि bilateral आप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि USA की टीम कहीं स्टैंड नहीं करती है. US का क्रिकेट बोर्ड ही नहीं है. You know, the kind of corruption and both financial and power corruption in USA cricket. मैं बताना शुरू करूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे. I have friends in USA cricket who have been trying to grow USA cricket since 2007. I'm talking about 2007. People who tried. People who tried and gave up. Literally gave up. They were like, you know what? We're too busy in our lives to waste our time and money and everything. So I know people who have tried to grow the game in US and who've given up because of the corruption and both financial and administrative corruption. So look, I understand what ICC is trying to do, and I agree that USA is the next big market that you want to crack, and that is also because of the expat population over there. But हर चीज का एक time होता है, एक तरीका होता है. You can't just take the game to some place where the infrastructure is not there. You know, they're having the American League, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ. Major League cricket के through आप इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करते एंड देन, मैं बायलैटरल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो. यू नो, जस्ट वेस्ट इंडीज जैसे T20 देता था फ्लोरिडा को, उससे आपका एटलीस्ट एक ग्राउंड तो बना था. बहुत छोटा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, और वहां पे भी बहुत अजीब अजीब हरकतें होती हैं जब इंडिया जाती है खेलने वहां. But modular stadiums, this, that, through MLC, they had the opportunity to grow the infrastructure, and then they could have thought about it. But they seem to be in a rush. The group is fairly easy, I think, irrespective of the result of India-Pakistan. I think India should qualify. Yeah. Obviously, we would want to beat Pakistan, but modular stadium, modular pitch, it's going to be very unpredictable. बहुत कहना मुश्किल है. Apart from that, the groups, I think the South Africa group is a tough one. I think who all they have, Bangladesh, South Africa, if you can take a look at the groups again. That was the group that caught my eye. South Africa, Sri Lanka, Bangladesh, Netherlands and Nepal. I mean, I'm looking at Netherlands or Nepal beating South Africa जब उनकी qualification पे आई होगी बात. Group C is also interesting, with New Zealand, West Indies and Afghanistan. Yeah. But the rest of the two groups are pretty straightforward. Yeah, and Jamie, I'd like to hear your thoughts on the part that USA is hosting a cricket World Cup. Chetan और साहिल ने काफी अच्छे से describe की अपनी feelings. Do you think this is too soon to give a World Cup to a country like USA जहाँ पे infrastructure इतना develop नहीं है, conditions इतने favorable नहीं है? Yeah, I'd have to agree क्योंकि I mean बहुत टाइम से चर्चा हो रही थी कि it is the next market. I think it already should have been the market. तो एक तरफ से देखे maybe it's actually too late given the fact that look, कोई भी World Cup उठा लो, WTC final देख लो, Srini was there. I think Chetan and I also had some common friends. You know, the NRIs, you know, the US expats, the US Indians. Let's talk about Indians. Forget the rest. They spend the most. I mean, I met people who the moment that India made it was confirmed India का final है, वो रातों रात 4,000 pound, $5,000 वो खर्च करके पहुंच गए अहमदाबाद, right? So look at it from two sides. From that angle, I think it's very, very late. This probably should have happened 15 years ago. लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? वो that's what Chetan and Sahil have already addressed. That is the infrastructure angle. I think we discussed
लास्ट ईयर 10-11 महीने पहले यहीं पे क्रिकेट नेक्स्ट पे. I don't see any future of USA cricket. Okay, I'm not going to get into the corruption and the management. वो गेम वहां के लोग कभी नहीं अपनाएंगे, right? It will be the 3-4 names that Sahil took, जो यहाँ पे कभी चल नहीं पाए. But what the US can do is the US can be a fantastic host nation, क्योंकि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अमेरिका से अच्छा कोई देश नहीं है जो स्पोर्ट्स चलाता है और जो स्पोर्ट्स होस्ट कर सकता है. इनके डीएनए में है, एंड देर लाइक द बिगेस्ट कंट्री, लाइक जियोग्राफिकली देर द बिगेस्ट कंट्री व्हिच हैज एवरीथिंग इन प्लेस. यूके ऑस्ट्रेलिया अच्छे हैं, पर जस्ट दिस इज द अमेरिकन वे. आई मीन दे वर होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप्स व्हेन इनका खुद फुटबॉल टीम भी था ना ठीक से. तो उस नजरिए से इट्स अ डैम गुड कंट्री टू होस्ट इट. But unfortunately, like Sahil been saying now for 6 months, 8 months, इनका ग्राउंड अभी रेडी नहीं और हमने इनको होस्टिंग राइट दे दिया, राइट? सो am I? Yeah, you finish. I'm saying you put Virat Kohli, Rohit Sharma in any ground, in someone's backyard, in a sand lot, 50,000 देसी वहां पहुंच जाएंगे. ये खासियत है और ये टैप इन करना पड़ेगा. But until you have the ground, I mean, Sahil is saying we might see part of wickets. Who knows, right? You're 5 months away from a T20 World Cup, और grounds कैसे होंगे हमें वो नहीं पता. So again, I don't know. I mean, I personally think it's very late to host. It's happened too late. But again, it's because the USA cricket is actually a joke to look at, right? Yeah, No, but, One thing I want to add there. You know, with the US, I think it's 94 USA you're talking about, right? Yeah. If the thing is, अभी भी अगर आप उसकी pictures देखें, you know, the stadiums were like 90,000 fans packed in Miami and all of that. Look, it's easy to convert those US football वाले जो soccer वाले fields है ना, it's easy to convert them to football. Yeah. They didn't have to do anything over there. Yeah. In fact, the next FIFA World Cup is also going to the US again. Yeah. So ऐसा नहीं है कि वहाँ पे stadiums build हो रहे हैं football के लिए. जो US की जो soccer जो होता है, सॉरी सॉकर तो फुटबॉल ही है, जो यूएस फुटबॉल है, ठीक है, जो उनका AFL है, AFL है, NFL, AFL इज इन ऑस्ट्रेलिया, जो उनका NFL है, you have those fields, they are of the proper circumferences and boundaries and whatever. So उसको फुटबॉल स्टेडियम में कन्वर्ट करने में it doesn't take too much. So you have ready-made football stadiums. It's the cricket infrastructure which is a problem, because you need that oval. The first cricket thing that happened in the US, if you remember, was Sachin Tendulkar Shane Warne वाला Champions वाला जो Masters में हुआ था. yeah. और उसके लिए बेसबॉल रिंग्स को कन्वर्ट करके एक मेकशिफ्ट क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया था. And that was the first indicator कि आपको क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फटाफट बनाना चाहिए. फ्लोरिडा में आया, it's a very small ground यार, hardly 15,000 people come into that ground, and it is beset with so many problems, you know. So क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत आसान चीज नहीं है. So from that perspective, while you know, yes, you need cricket over there, at the same time it's a little too early in terms of the infra to be going there. You know, Kanav, I'll just quickly add before you go back to Soumya. I'm just reading that India Pakistan June 9th could well be aired 8:30 p.m. India time, so that makes it 10 a.m. New York time. Yeah, that's what we're hearing. 10 a.m. New York. Yeah. How the hell are you going to grow the game in USA when you're asking their spectators to come at 10 a.m. on a Sunday? मतलब साहिल इंडिया पाकिस्तान के लिए 10 a.m. आपको लोग मिल जाएंगे. मैं वही कह रहा हूँ. Hardly 20,000 people you need. Hardly 20,000 people you need. आपको लोग मिल जाएंगे. It's the other games that are going to be an issue. What I'm trying to say is, if you look at the scheduling which was done for the Major League Cricket, they did not, fall for that India prime time bait. They kept timings which suited USA prime time. So Dallas, Texas के अंदर जो ग्रैंड प्रायर स्टेडियम के अंदर मैचेस हुए थे, वो रात को 1-1:30 बजे स्टार्ट होते थे. वो वहां की ऑडियंस को केटर कर रहे थे. आपको गेम ग्रो करना है तो इंडियन प्राइम टाइम को छोड़ने का जिगरा दिखाओ ना बॉस. आप अभी भी 10 बजे वहां पे गेम खेल रहे हो और बोल रहे हो आप यू हैव टू ग्रो द गेम इन द यूएस. यू आर जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी. आईसीसी हैज टू एडमिट दैट. Okay, यहाँ पे I will play the Srini role over here. ICC has nothing to do with this, because people who have played $3 billion are going to demand a prime time.
Exactly. Why Star That is, Sports paying $3 billion when they can't have an absolutely. India-Pakistan game at prime time? Unke I advertisements agree. I agree. Star is well within their rights to kind of put the pressure on them because a lot of money is riding on it. So why give the World Cup to a country like US in the first place? मेरा तो argument पिछले 10 महीने से अब यही है. मतलब multiple stories. If our readers, viewers haven't read them yet, जाकर पढ़ो बॉस. मतलब हम तो 10-11 महीने से यही बोल रहे हैं. यहाँ तो वर्ल्ड कप आना ही नहीं चाहिए था और अगर आपने दे भी दिया है तो थोड़ा बुद्धि लगाते यार. इंडिया के गेम्स को इस तरीके से शेड्यूल करते कि वहां पे गेम थोड़ा ग्रो तो हो. अब आप गेम्स वहां पर कराने चल दिए और आप सुबह 10 बजे वहां पर मतलब आई डोंट नो हाउ मच सेंस दैट मेक्स. एंड 3 गेम्स इन न्यूयॉर्क एट अ मॉड्यूलर फैसिलिटी. फ्लोरिडा के अंदर आप एक गेम कर रहे हो इंडिया वर्सेस कनाडा जो अपेरेंटली could well be the the bigger venues क्योंकि already established and they are exploring modular seating facilities also to upgrade the existing facility. Similarly Grand Prix Texas के अंदर भी वही होने वाला जो थर्ड शॉर्टलिस्टेड वेन्यू है. और वेस्ट इंडीज का आई थिंक चेतन ने बोला था या जेमी ने बोला था कि मतलब व्हाट इज देयर रोल बॉस. इंडिया के 4 मैचेस आप ले गए हो. वेस्ट इंडीज आर जस्ट क्वाइट स्पेक्टेटर्स. आईसीसी से पूछो यूएस क्या कर रहा है तो आईसीसी बोलता है यूएस एज अ एसोसिएट मेंबर नेशन आर जस्ट अ सिग्नेटरी ऑन द होस्टिंग अग्रीमेंट. All the powers and all the logistics lie with cricket West Indies. So cricket West Indies ने तो अपना वारंट खुद ही साइन कर दिया ना. सारा उन्होंने क्रीम तो वहीं दे दिया. सुपर 8 के अंदर अगर 3 फिक्सचर मिल भी जाएंगे तो बॉस आप कुछ नहीं उखाड़ने वाले उनसे. फिर मत रो पिट्टो कि हमारे पास मैचेस नहीं आते, हमारे पास कुछ नहीं आते. यू हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट योर फुट डाउन बट अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट बिकॉज अगेन द हाउस इज नॉट इन ऑर्डर इवन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट वेस्ट इंडीज. वहां भी उथल-पुथल चालू है. सौम्या, before going on to the next topic, your thoughts on all this. आपका क्या take है इस पे USA hosting this and whatever Sahil, Chetan and Jamie talked about? No, I totally agree with Sahil. कि मतलब आप क्या सोच के आप यूएसए लेकर चले गए यार. इतना ठीक है आप प्रमोट करना चाहते हो बट एज जेमी सेड the public there is not really going to accept the game, right? उसके बावजूद आपने इतना मेजर मैच जो एक आप मार्की इवेंट कहते हो, मार्की मैच कहते हो जिसको इंडिया पाकिस्तान, उसको आपने न्यूयॉर्क में रख दिया जिसका स्टेडियम ही नहीं, जिसके पास स्टेडियम ही नहीं. ओके आपको यूएस में करना भी था तो उसको शायद फ्लोरिडा ले जाते बट वो इस जगह पे जहाँ भी वेन्यू ही नहीं है. ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू थिंकिंग टू ग्रो द गेम जब 6 महीने पहले तक आपके वेन्यू सॉर्टेड नहीं है. आपकी सिर्फ सिटी सॉर्टेड है. सिटी में वेन्यू कहाँ खेलना है? क्या घर कॉलोनी में थोड़ी खेलोगे किसी सिटी की. So I don't really understand why are we, why is ICC in a hurry of taking it to US? ये जबरदस्ती किसी ने डंडा मारा है कि भाई नहीं लेके जाना ही जाना है. Why? No, इस पे सौम्या and I think both Jamie and Chetan would agree with me on this. It's a 10 a.m. start, right? The venue is not New York City. It's a couple of hours from New York and there's no train or the subway connectivity for which New York is kind of very known for. No, it's not in New York. It's not in New York. वही बोल रहा हूँ. Yeah, exactly. Long I have spoken with my friend who lives in New York City. Yeah, exactly. मैं भी उसी में आ रहा था. It's a 2-hour drive. Yes, it's you a 2-hour drive. Bloody early. Yeah, yes. yeah. So exactly what Shubham here is saying. 10 बजे के गेम के लिए मतलब आप सुबह 5:30 बजे उठ के निकलने वाले हो और आप अमेरिकन ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो who are, as Jamie and Chetan said, are the kind of audience who like a spectacle. They मतलब उनको लाइव स्पोर्ट पसंद है but for them live sport is more of a spectacle boss. आप NBA देख लो या Jamie. But I'm saying you're not going to get more than 10 Americans, and these Americans will be the Americans who've sort of warmed up to the brown man there. We want to know more, like it'll be the guy in the next cubicle. The American will not waste his time. If ICC knows, Star knows कि भाई 40,000 वेले इंडियंस पहुंच जाएंगे क्योंकि ये मरीज हैं इस खेल के. Don't expect the white Caucasian man. पागल है क्या वो? Sunday morning he'll be hungover, just like in the West Indies about 10 years ago. One sec. In the West Indies about 10 years ago, India's matches started to be played at 9:30. But Caribbean लोग 9:30 कहाँ जाएंगे? So no one is promoting the game. No one cares. They know कि Indian, Sri Lankans, Asian इतने वेले हैं कि वो उस भूख से पहुंच जाएंगे. And it's illogical. 5 o'clock, 6 o'clock, but Desis will show up. This is what we have to understand. ICC doesn't want the game to grow. So stop saying ICC doesn't want the game to grow. The same ICC is handcuffed by Star, which says by T20 World Cup में 8 teams लगाना बाकी. You think ICC actually wants Uganda to be there? Absolutely not. तो ये गलतफहमी मत पालना.
It's purely financial to tap into the North American market. Jamie, I have Yeah. a question. Okay, if it's all about money, right? Okay, I understand that, and I totally agree to what you just said, right? ठीक है, आपको game, if you want to, promote the game and get the monetary gains, ठीक है, But nobody wants to. Nobody wants to promote the game. Believe me. ठीक है, आपको मॉनेटरी गेन चाहिए, लेकिन आपको इस जगह हाँ. से एक से मिल जाएगा, तो ये तो कहीं से भी मिल जाता ना, ये तो किसी भी कंट्री में जाएगा, ये तो आप वेस्ट इंडीज में भी किसी वेन्यू पे जाकर करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का गेम, तो आपको मॉनेटरी गेन तो वहां भी हो जाता, तो They're वाई exploring a No, new because the market. Indians, because the Indians have to catch 2 flights to get there, ना. फिर भी आ जाएंगे. फिर भी आज एग्जैक्टली But there's for trust me, I spent long time in New York. Every गेम third person आपको there is Indian, and he's a rich Indian who misses. I was that person. I was in Boston. I was homesick. Had a match happen, I would have started my car and driven 7 hours. I was that person. And now you're talking about people who are earning 10, 15 times more. Stadiums full होंगे, लेकिन India matches के लिए होंगे. What you are talking about, that embarrassment will come when India is not playing. But right now, ICC and Star are only caring about India's matches. Nowhere else. In the West Indies, you'll get 1/3 occupancy. और वो 1/3 जो है वो देसी है जो रम पी के यार्ड में आके यूएसए वहां पहुंच गए. न्यूयॉर्क में आपको ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि देसी उठेगा तुम्हें 5 बजे और यार कोहली आया चल भाई. This is what you have to understand. ये होने वाला है. That's the thought process in my estimation because I've been that guy who would have paid $500 for a ticket 20 years ago, which is But utterly this is- ludicrous. But I was that loser 20 years ago. This is मैं for the अभी best- आईसीसी का रिलीज इशू हुआ तो मैं उस पे फिक्सचर्स देख रहा था. बहुत कन्वीनियंटली उन्होंने टाइम इग्नोर कर दिया है, तो वो कब अब 2 हफ्ते बाद आएगा, नहीं आएगा. Yeah, They yeah. haven't- वर्ल्ड कप से पहले आया, वर्ल्ड कप से हफ्ता पहले they आया. haven't mentioned start time yet. But this is for Yeah. the betterment of the US देसी crowd as you speak, not for the game. क्योंकि साहिल चलो वही ठीक है, है. अभी हम बात कर रहे हैं स्टेडियम के बाहर का और स्पेक्टेटर्स का. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशंस, इज इट गुड फॉर द गेम? जैसी कंडीशंस में जिन काइंड ऑफ पिचेस पे ये गेम खेली जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ड्रॉप इन पिचेस आएंगी एंड न्यू एलियन कंडीशन, एलियन एनवायरनमेंट फॉर द क्रिकेट फेटर्निटी. इतनी क्रिकेट वहाँ स्पेशली इन इंटरनेशनल टीम्स, इन प्लेयर्स ने नहीं खेली है, तो हाउ विल दिस इम्पैक्ट द ऑन फील्ड गेम? आई थिंक कनव इसमें कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि आप मतलब लेट्स अंडरस्टैंड दिस. न्यूयॉर्क का जो वेन्यू है ना, मैं मतलब जितना मैंने इसमें डीप डाइव करा था 6 months से जो मैं कर रहा हूँ, जो आईसीसी ने रेकी ट्रिप करे थे अपने when they were identifying venues in US, the only brief they had was to look for green spaces with ample parking space around the venue. That is it. जहां पे पेड़ ना काटना पड़े, इतना खुला ग्रीन स्पेस मिले. ब्रॉन्क्स काउंटी के अंदर जो एक वेन्यू आइडेंटिफाई हुआ था, जो probably was better accessible than the venue which they have shortlisted now, वहां आप देखो यार, when they kind of proposed of building that stadium, वहां का मेयर एकदम excited हो गया कि it will bring in a lot of money. वहां एक्टिविस्ट ने पूरा धरना वरना चालू कर दिया. 15 दिन के अंदर आईसीसी को अपना डिसीजन बैक ट्रैक करना पड़ा. That is when they started looking for this Long Island प्लॉट. मैं तो प्लॉट ही कहूंगा इसको यार, एक खुला एकदम ग्रीन पार्क टाइप है यार. मतलब इट्स अ ग्रीन पार्क राइट नाउ व्हिच हैज ट्रीज बट दे आर बियॉन्ड लाइक 70 yards ऑन ईच साइड. सो अभी वहां पर ग्राउंड लेवलिंग होगा. इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड येट. लेवलिंग होगा, ड्रॉप इन विकेट बनेगा. और जिस आदमी ने काम करा था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, द पर्सन हु टर्न्ड थिंग्स अपसाइड डाउन ड्यूरिंग द एमएलसी, जो टेक्सास वाले स्टेडियम के ऊपर काम हुआ था, काम वहां पर फिनोमिनल हुआ है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. यूएस कैन, मतलब अगर किसी कंट्री के ऊपर आप पैसा लगाओगे कि बॉस वर्ल्ड कप चाहिए 3 महीने में आपको खड़ा करना है, तो वो यूएस आपका पहला ऑप्शन रहेगा, बिकॉज दे कैन डू वंडर्स विद द टेक्नोलॉजी एंड द पर्सनल दे हैव and the resources they have, and that is exactly what they did with MLC. Last minute काम चला, but the venue looked very very good on air. I saw a lot of matches, मतलब visually बहुत अच्छा लगा. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वेन्यू खड़ा नहीं करेंगे, पर मॉड्यूलर वेन्यू, आईसीसी चेकलिस्ट, it's a different ball game altogether. Yeah, and Shubham is saying it is impossible to create cricket infrastructure without the help of local government. Land is so expensive in places like But California. you're not buying land in US. You're not buying land. So that is what I discovered. You're not buying land. So lease agreement जो होता है वो एक particular duration के लिए रहता है, और उसका जो यहाँ पे हम stamp duties और ये सारी बात करते हैं, तो मैंने वहां समझने की कोशिश करी थी. वहां पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, अगर आपकी चीजें अग्री भी हो गई ना और आप गवर्नमेंट सपोर्ट से यू गेट अ नॉड एंड मूव फॉरवर्ड विद इट. बॉस, ये वो कंट्री की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने मास्क पहनने पे बगावत कर दी थी, तो ये आपको अपनी पाक देके स्टेडियम नहीं बनाने देंगे. लेट्स बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट इंडिया कि मतलब जादू का छड़ी चला और जो होना है वैसा ही होगा. So it's a different.
Yeah, It's Chetan. not, these are not recreational parks यार where people go for walks and all. वहाँ पे proper cricket होता है. पीटर डेला No, पेना no, है. no, Chetan. The वो Bronx हुआ. County वाला जो था जिसके against protest हुआ, so that was a walkway to your park. So ये उसको intrude कर रहे थे. अभी भी जिन्होंने Fine, but the field New करी York है, one is but the New York one is not a recreational park. It's a proper no, cricket. this one is an cricket ground where isolated they thing. can- No, तभी तो ये Long Yeah. Beach पे गए. ये तो बहुत दूर Yeah. है ना शहर से. Look, इसीलिए. but the point is, the point is very very simple. It's आपको अगर गेम अभी मैंने ट्वीट भी किया है कि वेस्ट इंडीज पीपल आर सेइंग वो आईसीसी को यूएस में क्रिकेट ग्रो करना है. क्रिकेट को ग्रो करना का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे इंडिया का पाकिस्तान मैच करा दोगे. आपको क्रिकेट ग्रो करना है तो आप इंफ्रा डेवलप करो और यूएसए की टीम डेवलप करो, कनाडा की टीम डेवलप करो. फीफा डजंट टेक फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, फ्रांस वर्सेस जर्मनी टू द यूएसए ना. मतलब वहाँ पे वो यूएस की टीम उन्होंने ग्रो की है वहाँ पे. They have taken football. If you see, USA and Canada have been involved with the South American countries to grow football in North America to that particular extent. So there's a different way to grow the game than taking a World Cup. Tomorrow we want to grow a World Cup in China. We want to grow cricket in China. तो आप World Cup China में host करोगे. Make that make sense, ना? Make that make sense. So from that particular aspect, I'm not sure. See, इंडिया पाकिस्तान आप खिलाओगे. इंडिया, मैं आपको कह रहा हूँ, इंडिया कनाडा में भी अगर 40,000 का स्टेडियम होगा ना, वो भी भर जाएगा. I was in Melbourne यार in 22. India Zimbabwe 82,000. Nobody knew who India is playing. It was supposed to be India West Indies if everything went right. Then it was supposed to be India Ireland if everything went right. It ended up being India Zimbabwe. 82,000 लोग. There were 80,000 Indians जिनको पता नहीं था, जिन्होंने जब अपनी टिकट्स, अपनी फ्लाइट्स, अपनी स्टे बुक की थी मेलबर्न में. इट्स नॉट अ जोक. उनको नहीं पता था कि कौन खेल रहा है इंडिया. They just came. 80,000 people. They just came. So आप इंडिया को वर्ल्ड कप में कहीं भी खिला लो, वो ग्राउंड भर जाएगा. But is that how you're going? And there are not going to be any USA people in there, ना? So is that how you're growing the game? स्क्वाड में नहीं होंगे यार. स्टैंड में छोड़ो, स्क्वाड में मेरे को होम ग्रोन, चाहे इंडियन रूट्स वाला ही आपको कोई प्लेयर दिखा दो जो बॉर्न ब्रॉट अप एंड स्टडीड इन यूएस. मेरे को एक खिलाड़ी दिखा देना आप, मैं अपना नाम बता. See. If we talk about the MLC tried to do that. MLC actually did achieve that. There were Twitter threads that I read, really nice Twitter threads about 2 US blokes who went and watched a game MLC में. They really loved it. The way the players were interacting with the crowd, बहुत पास थे, सब कुछ था. Yeah. They really enjoyed it. They put it out on Twitter. बहुत मजा आया पढ़ के वो. A guy went with his father. And that's how you grow the game. That you play the local league matches. ये T20 जो leagues है ना, इसके through आप कर सकते हो. The ICC wants to grow the game. Get BBL and IPL to play some, some exhibition matches in the US. Get CPL to host some matches in the US. Yeah. Make a Florida team take part in CPL. Make a Florida franchisee team take part in the CPL. That's what South America did. And there was this one tournament they had, which included US and Canada and Mexico. That is how football kick-started in North America, really became big. So from a growth aspect, no. From a financial aspect, maybe. I mean, I don't understand how this is. But like I said, West Indies Cricket Board would be really pissed कि उसको इंडिया पाकिस्तान जितना बड़ा गेम नहीं मिला है. ठीक है, उसको सेकंड लीग के गेम्स मिल रहे हैं. जब इंडिया टॉप 4 में पहुंच जाएगा, उसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है. But ठीक है, you're saying that, okay, you know what, India will beat Pakistan, or even if India loses to Pakistan, India will still reach the second stage. I still don't understand. It's not as big as India Pakistan, na? If I'm a host nation, I want India Pakistan. यहाँ एक चीज I want to ask you, ठीक है, मॉनिटर गेम्स की भी बात कर लेते. लेट कीप असाइड द क्रिकेटिंग थिंग अबाउट इट. ठीक है कि क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहे, सब ठीक है, लेकिन कैपेसिटी कितना होगा? 20,000 30,000. अब वो इसके ऊपर जा नहीं सकते ना मॉड्यूलर में. तो कितना ही आप एग्जैक्टली कितना उस तो अपने स्पेक्टेटर्स अगर आप हाउसफुल भी कर दो तो भी आप बियॉन्ड भाई भर भी नहीं पाओगे ना यार. इसके बियॉन्ड भर भी नहीं पाओगे. मतलब वो
सबसे बड़ा जोक होगा अगर इंडिया पाकिस्तान गेम के अंदर आपको 5,000 सीट खाली मिल जाएगा, तो वो रिस्क आईसीसी लेगा नहीं ना। सो कैपेसिटी उतना रखा जाएगा कि जो रियलिस्टिकली भर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई कोटा जॉब नहीं चलेगा ना कि 50 टिकट देके सुबह सुबह 50 टिकट खोल दी तो 100 बायर आ गए। This is US we are talking about, boss. And so what I'm asking is कि ठीक है आपने 20-30 हजार कैपेसिटी फुल भी कर दी, ठीक है, तो भी आपने कुछ बहुत अमेजिंग तो नहीं कर दिया, बहुत आपने इससे बहुत बेटर मैचेस कराए हैं। सो अगेन व्हाई यूएसए जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है, जब आप उस पे क्राउड उतना नहीं ला सकते जितना आप जनरली लाते हैं। But you're only getting 20,000 in two countries, England and India. आपको न्यूजीलैंड में 20,000 कहीं नहीं मिलेंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम, तो कौन से देश हैं? There's no other country. Yeah. There's two countries where you can get 20. One is guaranteed, and even England, there are some grounds which are 15, 18. So it's not unnatural. The US grounds, yes, they're smaller, but is it a massive difference? If you get 15,000, that's your average New Zealand ground. So there's no argument there. And New Zealand grounds are great, man, to watch cricket. Like they're great. They're fantastic. Best in the world. But there's only 18, 20,000 people coming, no? South Africa में 2007 T20 वर्ल्ड कप देख लो, कोई भी ग्राउंड फुल नहीं था। No, even अगर आप अभी full is only India. जो पंजाब का नया वेन्यू बना है, इट्स अ ब्यूटीफुल वेन्यू व्हिच दे हैव मेड, लाइक बहुत स्पेस था उनके पास, बट दे केप्ट द कैपेसिटी अराउंड 30,000 ओनली। रियलिस्टिक रखा ना, मतलब बड़ा है तो बेहतर है, तो ये थ्योरी तो मतलब हर चीज के साथ अप्लाई नहीं करता। तो बीसी इंडिया वाज प्लेइंग, अरे साहिल यू वर देयर, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल, देयर वाज नॉट इवन 1 लाख देयर। तो आपका 1,30,000 कहाँ गए? तो यहाँ 1 लाख नहीं हो रहे, यूएस में 15,000 बहुत है यार। हाँ बहुत है, राइट। बट 100 में उससे फायदा किसी का नहीं होने वाला। अगर आप कहोगे इससे क्रिकेट ग्रो होगा, नहीं। देयर आर बिगर थिंग्स बॉस, मतलब ओलंपिक्स, एलए ओलंपिक्स, क्रिकेट एंट्री इनटू ओलंपिक्स, ऑल दोस थिंग्स वर फैक्टर्ड इन। मतलब ये बहुत सारी चीजें वर एट प्ले, एंड यू नो BCCI could have put its foot down, but again India were chasing that Olympic dream to 2036 के अंदर। They are hopeful of hosting the Olympics. Jay Shah became part of ICC, so they played a master stroke. They included BCCI secretary Jay Shah on ICC's Olympic panel, जिसके अंदर सारा स्ट्रैटेजी एंड डिस्कशन हुआ। देन IOC का वी नो मिसेस नीता अंबानी वाज ऑलरेडी देयर लीडिंग द चार्ज फॉर क्रिकेट्स एंट्री इनटू ओलंपिक्स, एंड देन प्रॉब्ली इंडिया होस्टिंग द गेम्स इन 2036। तो बहुत सारी चीजें आ रहा है प्ले हियर यार। मतलब इट्स नॉट जस्ट one stakeholder who's interested in getting the game to the US. इंडिया के अंदर भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं गेम वहां हो, क्योंकि इससे लार्जर गोल उनका भी एड्रेस होता है। पर वहां गेम ग्रो होगा, ये अगर कोई फूल्स पैराडाइज में बैठा है तो आज ही अपना मिथ वो बस्ट कर दो। वहां गेम वर्ल्ड कप करके ग्रो नहीं होगा। वर्ल्ड कप आएगा जाएगा, सब क्रिकेट भूल जाएंगे। कोई वहां पे एसजी या बीडीएम या एसएस की स्पोर्ट्स शॉप्स नहीं खुलने वाली वर्ल्ड कप के बाद। किसी को नहीं समझ आने वाला यार, मतलब वो कल्चर में ही नहीं है ना उनके। Yeah, as they say, when you want to grow something, you start from the roots. आप सीधा ऊपर से ही वर्ल्ड कप शुरू रख देंगे तो रूट्स के अंदर, मतलब आई रिमेम्बर माइनर लीग, मेजर लीग से पहले माइनर लीग हुआ था, जहां पे ये स्मिथ पटेल, उन्मुख चंद, हरमीत सिंह, सौरभ नटवर लेकर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिम करेक्टली, जो बॉम्बे का मीडियम पेसर था, वो गया। ये सब जाके खेलना शुरू किया। सो दे यूज्ड टू पोस्ट वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। बॉस दे वर प्लेइंग ऑन मैटिंग विकेट्स। जो माइनर लीग हुआ था, मैटिंग विकेट आपको यहाँ पे इस टाइम दिल्ली बॉम्बे कहीं पे नहीं दिखेगा। मतलब मैटिंग विकेट तो मतलब सोचो डेथ ही कर दी ना आपने क्रिकेट की। तो जब आपके रूट्स मैटिंग विकेट के ऊपर खेल रहे हैं, तो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो टू ग्रो द गेम, एंड वर्ल्ड कप इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट व्हिच द आईसीसी एंड द वेरियस स्टेकहोल्डर्स आर होपिंग फॉर।